And you just do one calculation. I will give you the value. Let us say that V is around 2000 volt and B is roughly 1 centimeter, not very big, and A is 0.005 centimeter. That is 0.05 millimeter, you can say, so very thin. So just do the calculation. What is the electric field at a distance when R is roughly, you can say, 0.1 millimeter. So at that particular range, means very close to this wire, what is the E value? Exam में 3 number का question आता है. Just these values are given to you. Find the electric field and how the electric field will vary from the center to the boundary. तो पहले हम एक निकाल लेते हैं कि 0.1 mm के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा क्या. So just do the calculation and give me the value in terms of volt per meter. ये वैल्यू कितनी होगी फटाफट कैलकुलेशन करो. जस्ट पुट द नंबर्स एंड डू द कैलकुलेशन. आर की वैल्यू वेरी हो सकती है. मैंने 0.1 पे पूछा है. 0.01 पे भी आंसर आ सकता है बिकॉज दिस डिस्टेंस यू कैन मैच एटलीस्ट इस रेडियस से तो बड़ा ही होना चाहिए. जस्ट एट द सरफेस ऑफ द रेडियस ऑफ द एनोड what is the value, so we can write this value also here. So what at that point, what is the value of electric field? कितना आएगा वैल्यू एक बार जरा कैलकुलेट करो. Because once you calculate this value, then we will start with the process. What happens due to such a value of electric field? What the new things will happen in this with respect to your ionization chamber? Three megavolts. 3 मेगा आ रहा है और किसी ने निकाला 3 मेगावोल्ट पर मीटर ना. Yes, sir. Roughly of the order of mega to थोड़ा ज़्यादा आ गया because I am getting very close. It could be around 5 or you can say 4. So this much of high value of electric field just near the surface or just a very small distance from the anode. And as you move away, that is going to decrease because it is proportional to 1 upon R. So if you plot the field, electric field with distance from the anode, it will be something like very high value to very low value as you move away and when you reach to the boundary. So that roughly going to be 0. So सिलेंडर में हमारे पास जब हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटी पढ़ते थे तो उसमें नॉर्मली इसकी वैल्यू बहुत छोटी नहीं होती थी. इट इज ऑफ सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. तो दे आर कंपेरेबल. So now intentionally what we have made a very thin wire. So what happens when the charged particle enter into this one? So normally it is going to ionize. It is going to ionize the gas. So means positive and negative charge will generate. जैसे पहले process था वही process यहाँ पे. ठीक है. Same process. So there is no difference in that. The process is same. So gas you are filled with certain gas and the gas will get ionized along the track of the charge particle which is going into the your this proportional counter. Now those electrons, obviously we don't go in a more quarters with the collection of ions because they are moving slow. तो ions के collection के लिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, but electron के collection के लिए मैं ध्यान रखता हूँ because electron will get collected in a very small time and they will give you the peak at the output. So when the electron near to this anode means those electrons which are somewhere here and those electrons somewhere very away from the anode. So they are moving with a very small velocity. Obviously they are produced after ionization process and they will start moving towards the anode. But those electrons which are away from this particular anode,
they don't have good amount of energy. But when they reaches to this particular area, somewhere here, I will just mark with this blue so that, or I can mark with red. So we can have certain distance within this distance from the anode, और ये पूरा ये सर्कुलर होगा ना, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम क्या है सर्कुलर है. इस रीजन में एक बार once the electron enter into this region, it is going to experience a good amount of electric field. And when this electron feels that particular electric field, they get accelerated. And their acceleration is so high, the velocity changes to such a high value that they are capable of generating few more electrons. This is what is the basic difference between ionization and a proportional counter. It means how many ions or electron ion pair you have produced by the incoming radiation. Now this number is going to increase. Why this number is going to increase? Because you have changed the geometry of the proportional counter. You have made an anode, you have made a cathode, and they are in a cylindrical form. And the electric field near the anode is very large. If it is very large, so electron before reaching to the anode, they have a capacity or they're capable of generating few more electrons, and these are called secondary electrons. Means what happens? Your current will improve. पिछले केस में क्या था, जितने आयंस प्रोड्यूस हो हमें उसे कलेक्ट करना है बस, उससे हमारे एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो रहे थे. बट नाउ इफ यू हैव जनरेटेड से बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन गो, एक चार्ज पार्टिकल है एंड यू हैव गॉट अ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ every electron is capable of generating, say, let us say 30 more secondary electrons. When they are reaching to the anode, before that they can generate a 30 more electrons. Everyone is generating a 30 more electrons. So now your total collection at the anode means charge collection, that is not 1 billion, that is 30 billion. So 30 times you have improved your current collection at the output. So your reading, whatever the reading you are getting at the output, that is feasible, that is measurable. Ionization में थोड़ा सा problem होता है, that is working for hardly अब ionization use ही होता है, अब use होते हैं, even proportional भी use होते हैं. Proportional, if you are more concerned कि आपको energy note down करनी है incoming particle की, then you have to go with the ionization or proportional counter. Otherwise you go for Geiger. Geiger या Geiger कह सकते हो, कई लोग इसे Geiger भी कहते हैं. Geiger is the same person who has done the experiment of Rutherford scattering. तो Rutherford ने जो अपना पेपर पब्लिश किया था, तो Geiger और Marsden के बेसिस पे ही किया था. तो Geiger is the same person. So if you are concerned with the energy of incoming particle, then you do ionization or proportional. Otherwise you go with something else, and that we will discuss in detail. क्योंकि एग्जाम में वो ज्यादा आता है, Geiger या Geiger मोलर काउंटर. तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया. अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है, यू कैन कैलकुलेट. द प्रोसेस इज क्लियर टू यू that what is happening, and the total charge collection, total charge which you collect at this particular whatever the circuit you have made, that is equal to the starting number of ion pair which has been generated, which is n naught, the charge of the electron, and there is one factor which is called as m, which is called gas amplification. जैसे हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है ना, हम इनपुट देते हैं फिर एम्पलीफाई हो जाता है, और आउटपुट हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई 100 से होता है, 200 से होता है, लाख से हो सकता है, व्हाटएवर नंबर यू जस्ट व्हाटएवर द नंबर यू गेट, वी जस्ट मल्टीप्लाई विद दैट. सो उसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पे भी दिस इज वर्किंग एज अ गैस एम्पलीफिकेशन. सो व्हाई दिस गैस एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज कमिंग? जब तक हमारा आयनाइजेशन था तो सिर्फ ये नंबर आते थे. इनिशियली कितने जनरेट हुए पेयर्स आपके, उसको आपने ई से मल्टीप्लाई, दैट इज द टोटल चार्ज यू आर कलेक्टिंग, and whatever the time you are taking, that will give you the current value. Now your new number which is introduced, that is called m. The value of m for the proportional counter is roughly around 10 to the power 4 or 6. Let me just give you the number. Yes, 10 to the power of 6 or 8 I have written, but that is large value, that is for Geiger. Okay, so this is 10 to the power of 2 to roughly 10 to the power of 4. So इतने टाइम में only 100 electrons extra secondary electrons, or it can be thousands, 10,000 of secondary electron can be generated by a single electron.
and how many electrons have been initially generated, that is decided by the whatever the incoming particle or whatever the energy of the particle is having. E alpha है, अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, गैस का आपको पता है कि कितना रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है, तो डिवाइड बाय दैट नंबर यू विल गेट n नॉट। और m अगर आपको पता है कि आपने क्या गैस डाला है और आपने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पता ही है कि इसका गैस एम्प्लीफिकेशन वैल्यू 100 है, यानी every electron is capable of generating or 10,000 more electrons. So you have to multiply that. Means your this number is going to improve. जो आपको नैनो वोल्ट या फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो वोल्ट में मिल रही थी रीडिंग, अब आपको माइक्रो वोल्ट में मिलना शुरू। माइक्रो वोल्ट विल बी मोर फिजिबल, मोर मेजरेबल, मोर इजी टू हैंडल दैट। एंड अगर आपका वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ जाए, मिली वोल्ट में आ जाए, तो आप मल्टीमीटर से भी बैठ के मेजर कर सकते हो। सो दैट इज वेरी इजी, दैट इज यू कैन यूज मल्टीमीटर। अगर आपका वैल्यू माइक्रो या नैनो में है, then you need amplifier also. The amplifier circuit भी अच्छा चाहिए, noise भी हटाना है, तो that device is heavy. तो proportional counter थोड़ा heavy होता है, उससे heavy ionization होता है, और जैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट लाइट हो जाता है। You can do with a multimeter. आपका वोल्टेज अगर वोल्ट में आ गया तो that is वोल्ट, मल्टीमीटर is enough. मल्टीमीटर तो छोटा सा हार्डली 700 का आता है, यू कैन हैव दैट। तो जैसे जैसे हमारी कलेक्शन स्पीड बढ़ती है और कलेक्शन वैल्यू बढ़ती है, तो कॉस्टिंग भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। एवरीथिंग इज डन इन दिस चैम्बर ओनली। सो दिस इज द, इसके पीछे वैसे यहाँ पे फॉर्मूला भी है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि हाउ द फॉर्मूला ऑफ दिस गैस एम्प्लीफिकेशन वी गेट। तो उस पे हम नहीं जा रहे हैं डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में उतना आता नहीं है। तो ओनली गैस एम्प्लीफिकेशन वैल्यू इज आस्क्ड फॉर द प्रोपोर्शनल काउंटर, द फॉर्मूला इज देयर व्हिच इज यूज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, थोड़ा सा ग्राफ बना दिया आपने, डायग्राम बना दिया, व्हाट इज हैपनिंग यू कैन डू इन अ एलोकेट वे। सो नाउ इफ वी वांट टू सी द प्रोफाइल, कि अगर हमारा जो हमने पिछले केस में भी देखा था, जो मैं प्रोफाइल दोबारा आपको बना के दे रहा हूँ, मे बी वी हैव ऑलरेडी डन दैट। वोल्टेज ऑफ द प्लेट जो आपने डिजाइन आयोनेशन में दिया और जो आपने सिलेंडर में दिया, this voltage we are writing somewhere here, and this I have drawn, if you remember, ये हमने बनाया था शायद, अगर याद हो तो। इनकमिंग एनर्जी का E1 वैल्यू है, रेडिएशन का ये E2 है, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी वी विल गेट डिफरेंट सैचुरेशन वैल्यू। So this is the case of ionization. Now if you further increase the voltage, you get the case for your proportional counter. So up to this range means up to certain voltage, these are in hundreds of volt, these are in kilovolt range, this is hundreds of volt, एंड E1 E2 में भी फर्क है, यानी इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी की वैल्यू हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग आयनाइजेशन चैम्बर, और इवन वी कैन रिड्यूस यूजिंग प्रोपोर्शनल काउंटर, बिकॉज करंट पल्स की हाइट डिपेंड करेगी E1 और E2 पे। हाउ मेनी चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, that will decide what amount of current you are going to get. And as you increase the voltage, they're going to merge, and now they become a single line, and after a certain time they become flat. This particular range, which is, this is in kilo or this is in tens of kilo volt. अब जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, अगर आपने टेंस ऑफ किलो वोल्टेज अप्लाई कर दिया इसी डिजाइन पे, you don't see two different lines, you only see a single line. It means आपका अल्फा पार्टिकल अगर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तब भी करंट की वैल्यू उतनी होगी आउटपुट पे। अगर आपका अल्फा पार्टिकल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, तब भी आउटपुट उतना ही करंट होगा। अगर 5 का होगा, means you are not concerned with the energy of the incoming alpha particle, we are more concerned that alpha particle is there or not. अगर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल इस एरिया में है या नहीं है, बीटा है या नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, तो you don't want the instrument which is going to have a different energy profile. They should work in the same way. कोई भी एनर्जी का पार्टिकल हो, I should get a similar value. यानी what I can say that if I go on increasing the voltage, अभी हम वो डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, और सभी इस प्रोफाइल पे मुझे दोनों केसेस के लिए डिस्कस करना। दिस इज प्रोपोर्शनल and this is ionization chamber, and this is your Geiger Muller.
सो गाइगर मूलर वाला आपका सिंगल फ्लैट लाइन हो जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों हो जाता है एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट. But in this case, when you increase the voltage which is applied between the plates, you don't recognize the particle energy. You only recognize the particle कि particle है वहां पे. Even you don't able to understand कि वो electron है या alpha particle है या क्या है, बस है. तो जहां पे भी रेडिएशन लीक होता है ना, देयर गीगर इज यूज्ड. तो गीगर का काम है टू चेक वेदर द रेडिएशन हैज लीक्ड और नॉट. रेडिएशन किस कैटेगरी का है, क्या है, उसका स्पिन क्या है, चार्ज क्या है, एनर्जी क्या है. फॉर दैट यू नीड अदर इंस्ट्रूमेंट. बट टू चेक if the radiation has leaked or not, then you need a Geiger Muller counter. It just give you the signal. Yes, somewhere the radiation means it is not obviously वो एक लिमिट में ही चलेगा. ऐसा ना हो कि भी किसी भी लाइट पे रेडिएशन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए, किसी भी लाइट पे कोई भी लाइट एंटर करेगा गीगर में और इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, क्योंकि इवन अल्ट्रावायलेट इज आल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग आयनाइजेशन. दैट इज आल्सो पॉसिबल. अल्ट्रावायलेट भी कर देते हैं ना आयनाइजेशन गैस में, जो आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं. तो आयनाइजेशन प्रोसेस कैन बी डन विद अल्ट्रावायलेट आल्सो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि समवेयर कि भाई ये रेडिएशन लीक है, तो हमें इस तरह से मेजरमेंट चाहिए कि वो एनर्जी से डिसाइड ना हो. लीक है तो यस, इट विल गिव मी आंसर यस. Leak nahi hai, it will give me answer no. This is what we want. So what happens if I increase the energy furthermore? What you have seen that if you have thousands of volt or 2000 volt, then you get this kind of order. This is the order. Any 10 to the power of 5 volt per meter, we are getting the electric field. If you increase further more time, 10 times, so it means this is going to increase at least 10 times. So roughly, when you have this ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है, ज्योमेट्री इज सेम. ज्योमेट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं. इट इज अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड एवरीथिंग इज सेम, बट द अप्लाइड वोल्टेज दैट इज इसलिए इसको हम काउंटर कहते हैं, डिटेक्टर नहीं कहते हैं. दिस इज अ गीगर मूलर काउंटर. तो नॉर्मली जीएम काउंटर के नाम से फेमस रहता है. सो जीएम काउंटर, द अप्लाइड वोल्टेज इज ऑफ रेंज ऑफ टेंस ऑफ किलो वोल्ट. बहुत ज्यादा है. 1000 10,000 volt आप अप्लाई करते हो, 10,000 15,000 20,000 समथिंग लाइक दैट. The electric field, which is 1 upon r, sorry, v upon r ln of v by a, and they have similar parameter. a की वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर होगा और b की वैल्यू अराउंड सेंटीमीटर में होगा, और r की वैल्यू आपके वेरी करेगी फ्रॉम सरफेस ऑफ द एनोड टू द कैथोड इन द रेडियस. So that electric field will be roughly of 10 to the power of 7 near anode. एनोड के आसपास की वैल्यू है वोल्ट पर मीटर 7, और इट कैन बी अराउंड 8 आल्सो. सो दिस इज फर्दरमोर, जो पहले मिल रहा था उससे ज्यादा हो गया है. सो व्हाट विल हैपन, लेट मी जस्ट मेक द डायग्राम. व्हाट वी कैन सी हियर, दिस इज अ एनोड. ये डायग्राम कई बार चैम्बर का होता है ना, वो बनाने को होता है. सो दिस इज योर एनोड, and somewhere I will not make the radiation which is going inside. This is only anode, there is no cathode I have drawn. Okay, because we are dealing with a near to the surface only. So the electron is here, which is being generated by some ionization process due to the some incoming radiation which is entered into the Geiger through a window. So before reaching to the anode, it will generate few more electron. Let us say 3 it has generated. And these 3 which has been generated, now they are also capable of generating 3 more, and this is also going to generate 3 more. And this shower is goes on so many, means they before reaching to the this anode, the shower is very high. If we take a picture of that, book में कई जगह उसके mathematical formula से draw करके रखा हुआ picture, and you get a very good cloud. So cloud of electron is somewhere being actually covering up the anode, and another electron somewhere here that is also being capable of generating the things, and they will also do the shower. वैसे आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, वो भी आपके जो दूसरे साइड पे वो भी आपके शावर जनरेट करेगा. And sometime what happens that some of these secondary electrons which has been generated due to this primary, ये सारे primary electron which has been generated due to ionization. The secondary electron is capable of generating, means what it can do,
before going to anode, it can even make certain atom into excited state, and very strongly, very strong excited. Means आपके oneness को निकाल करके उसने पता नहीं 4f या किसी 7s वाले ऑर्बिट में डाल दिया. Very large difference. So when that is a capable, means वहां पे क्या होता है कि that atom is going to produce a UV radiation, and we know that UV radiation is also able to generate the electrons. तो किसी दूसरे atom को hit करेगा किसी दूसरे place पे, and again the electron is going to means. Now one more thing I just ask you, what happens if this process, and this process is very fast, it hardly take maximum time of 10 to the power of -8 seconds, so -7 seconds, let us say 10 times of your ionization, whatever the transition energy is. तो transition के लिए में 10 to -8 का time लगता है ना, तो उससे 10 times ज़्यादा रख ले, 10 to -7. So what happens, even a single electron, even a single electron is capable of generating such a large number of electron which can fill up the anode. जरूरी नहीं कि हमें 3 प्राइमरी चाहिए, 10 प्राइमरी चाहिए, 1000 प्राइमरी चाहिए. No, only one electron is capable. Only one electron is capable of generating several more electrons, because UV has been generated somewhere here. The UV has been generated. This will also generate a UV, and they again make a. इसको हम कहते हैं avalanche. Have you heard the word avalanche? Avalanche word आपने सुना? मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर में कभी पढ़ा हो. avalanche नहीं पढ़ा? ब्रेकडाउन में सुना. ब्रेकडाउन में पढ़ा ना. तो ब्रेकडाउन में क्या होता है, one electron start producing several more electron and conductivity increases. तो avalanche आपने देखा भी होगा मूवीज में, वो जब बर्फ होता है उसमें आइस आपकी जो जब स्टार्ट होती है मेल्ट होना, if even a small ice start melting down and it just slips, then it can go on collecting several more different ice particle around it, and it go on increasing its size, or it can generate a huge amount of light. एक starting एक छोटे से होता है, but it goes on collecting itself. उसका mass इतना बढ़ जाता है कि it can do a big slide. तो avalanche is that. So start तो बिल्कुल एक simple spark से होगा, but that can generate a very large you can say dominating effect. तो सेम सेंस में अब हमारे पास जो इनकमिंग पार्टिकल है, अब उसका भी हम डिजाइन देख लेते हैं कि इनकमिंग पार्टिकल से क्या प्रोसेस हो रहा है. When the incoming particle is being passing through this particular gas, at starting when it has entered into the your GM counter, it has generated an electron, और उसको थोड़ा टाइम लगा अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने में. बट इस इलेक्ट्रॉन के पास टाइम भी नहीं मिला कि ये आगे के रिएक्शन कर सके, उससे पहले दिस इलेक्ट्रॉन हैज फिल्ड होल ऑफ द GM काउंटर. एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ दिस इज द केस. अगर पहले के केस में क्या होता था, सारे इलेक्ट्रॉन आपके जो ऊपर मैं केस दिखाता हूँ, हियर समवेयर हियर द सेम पिक्चर, एवलांच इज आल्सो देयर, मींस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो कम हो रहे थे. मींस दे आर समवेयर हियर, वन इज हियर, वन इज हियर, say one is here, so that number is few, that number is not so large. So they are generating certain number of avalanche, and that number of avalanche is proportional to the number of ion pair. कितने ion pair generate हुए हैं by the incoming radiation in the ionization chamber, sorry, in the proportional counter, number of avalanche will be proportional to this n naught. कितने पेयर जनरेट हुए इस पर डिपेंड करेगा आयनाइजेशन. बट गीगर मोलर में इज नॉट द केस. गीगर मोलर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है. आपके जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, दे आर सो हाई एनर्जेटिकली दैट दे कैन आल्सो जनरेट यूवी रेडिएशन बाय डूइंग अ कोलिजन विद द एटम्स. सो ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग whatever the number of avalanche you require to fill up the anode. मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10,000 avalanche मुझे चाहिए पूरे एनोड को फिल करने के लिए. So if I want to fill the anode completely by the electron cloud, I need 10,000 avalanche. That 10,000 avalanche can be produced by a single electron. That is possible in Geiger. That is not possible in the proportional counter.
तो कई बार अगर डिफरेंस आता है तो यू शुड नो द डिफरेंस। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है, दोनों में आपके नंबर ऑफ एवलांच के डिफरेंस है, और दोनों में आप क्या करते हैं, एक में एनर्जी से मैटर करता है आपका जो आउटपुट पल्स है, दूसरे में एनर्जी से मैटर नहीं करता है। तो आफ्टर ऑल द प्रोसेस वी विल can see that what is the difference between at least 5-6 difference you will able to pinpoint. Just hold on a minute. So, one electron can produce 10,000 avalanche. So this is enough to fill up the anode. Why I'm asking, why I'm saying this fill up the anode, fill up the anode? अब मैं उसको समझाता हूँ कि fill up the anode का meaning क्या है. What happens that avalanche तो generate हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हो गए, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हुए, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जब जनरेट हो रहे हैं तो आयंस भी जनरेट हो रहे हैं. It means what is happening now, this picture is just at the starting of the what the avalanche is started. After the avalanche has been done, means all the avalanche has been done, then what will happen? Then what will happen that this is your anode. These electrons are light and very light, and electric field is very high, so they get collected at the resistance which you have attached and you get a pulse. आपको एक पल्स पीक मिल गया इलेक्ट्रॉन के कलेक्शन से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो लाइट थे इसलिए आपको आउटपुट भी मिल गया, करंट मिल गया, और टाइम के साथ आपको एक पल्स का एक प्रोफाइल भी मिल गया. दैट प्रोफाइल वेरीज विद गीगर टू गीगर. बट व्हाट हैपेंस, द आयंस व्हिच आर वेरी हेवी एंड दे नीड टाइम, एटलीस्ट 1000 टाइम्स उसको ज्यादा लगता है अपने कैथोड पे रीच करने में. So all the process, this process, the avalanche process has happened just at the surface of the anode, within a fraction of millimeter, यानी 0.001 मिलीमीटर के अराउंड ये सारा प्रोसेस हो रहा है. उस बाकी सारा जो गीगर का जो स्पेस है ना, that is hardly any activity is going on. It is just they don't know what has happened. उनको पता भी नहीं कि क्या हुआ है. But just at the surface of the anode, these things has happened means electron pair has been generated, secondary electron ion pair has been generated, and that is completely filled the anode, it has covered the anode. So electron got collected, but what has remained is the positive ions. और पॉजिटिव आयंस एक नहीं है, बहुत सारे हैं. जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमारे पॉजिटिव आयंस भी जनरेट हो गए जो आपके गैस है ना. तो व्हाट इट डू, it actually cover up the anode. एनोड खुद से ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से अब इनका जो जर्नी स्टार्ट होगा आउटवर्ड होगा. दे विल ट्राई टू रीच द कैथोड. इनकी जर्नी कहाँ होगी, आउटवर्ड स्टार्ट होगी. बट इलेक्ट्रॉन जो जनरेट थे वो सारे के सारे कलेक्ट होकर के हमें पल्स भी मिल गया. They now need a time to go to the cathode, and once they will go to the cathode, they will get neutralized, and after neutralization, then they again can be used as a ionizing gas. So when for a certain instant, for certain moment, what other gas means, what the Geiger, outer part of the Geiger, what it will see, that size of the anode has increased. The effective A dash is now increased because there are so many. They're not one or two. There are so many, and all are covering the, means the anode is invisible. It has been covered by the positive ions. And these positive ions are roughly of the size of 0.01 millimeter, you can say, or 0.01 millimeter. It's roughly like this one. आपने तो एनोड का डिजाइन 0.005 रखा था. जब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से फिल हो गया तो now it become 0.01. So size of anode has increased. Now this is A dash. A dash is greater than your designed anode radius. Agreed? Agreed? Yes, sir. Then what will happen? अगर ये size increase हो गया anode का तो क्या effect क्या होगा, उसका outcome क्या होगा?
What will be the outcome? If the radius of the anode has increased, then what is going to happen? Effectively, the radius has increased. Then what is going to happen? उसका रिजल्ट क्या होगा, implication क्या होगा? गेस करूं क्या implication होगा? If this has been now this, E imagine decrease as if करेगा. anode, क्या होगा बोलो? E decrease करेगा. Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका फॉर्मूला था ना, v डिवाइडेड बाय v, आपने चेंज नहीं किया. रेडियस भी आप कितने डिस्टेंस पे मेजर कर रहे हो, समवेयर हियर यू आर ट्राइंग टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस. That ln of b by a dash, now this is the formula, a dash is increased, so this is going to decrease. If this is going to decrease at that time, means when they are starting their journey and before reaching to the cathode, if another particle comes in, it will not be measured. वो जब आएगा तो वो आयन पेयर जनरेट करेगा, बट उससे कोई एवलेंच नहीं होगा, and you will not get any pulse. So you will miss that particular ion incoming radiation. It means till they are getting collected to the cathode, इनको cathode तक reach करना है, माइनस चार्ज जो यहाँ पे हमारा, जब तक ये reach करके पहुंचने जाते हैं, and they make this anode again capable of generating such a huge field, so that time is roughly of a fraction of microsecond. The time is roughly fraction of microsecond or somewhere, sorry, not fraction, maybe tenths of microsecond. थोड़ा सा time लगेगा ज़्यादा. तो tenths of microsecond तक, even in that time, if the radiation enters into the this Geiger Muller counter, it is not counted because it does not know. कुछ हुआ ही नहीं process, avalanche create ही नहीं हुआ, field आपकी इतनी strong नहीं थी कि avalanche create हो सके, secondary electrons create नहीं हुए, you don't get a pulse, big amount of value at the output. So what happens? Whatever the time this positive ion takes to reach to the cathode, that time is called as dead time of the instrument. Dead time कहते हैं उसको normally. Means the instrument is dead. It is not doing anything at that time. It needs certain time to recharge itself to such a value. So this is a dead time. Normally tau से इसको वो करते हैं, और microseconds के आसपास का value होता है. Tens of हो सकता है, fraction of हो सकता है, microsecond हो सकता है. That will depend upon instrument to instrument. And in that time, if you get a radiation, that goes uncounted. That goes uncounted. आप उसको count नहीं कर सकते. This is a limitation. This is a problem. This is a problem. This is one problem कि आप इसके आपकी limitation है, इस time पे आप measurement कर ही नहीं सकते. This is a dead time. पिछले केस में ऐसा कुछ नहीं था. पिछले केस में आपके ions generate करेगा, जब भी वो आएगा तो it will generate because ionization is there and that charges you are going to collect. And you can see the profile. आपका profile हो सकता है आपके बहुत सारे pulse, फॉर एग्जांपल एक अगर इनकमिंग होता है आयोनेशन चैम्बर की, अगर हम बात करते हैं आयोनेशन चैम्बर में एक अगर रेडिएशन एंटर होता है इन अ सर्टेन टाइम एंड यू गेट अ पिक, मींस समथिंग लाइक दिस वन. If another radiation comes suddenly, so you will get another peak which is very near to that. If you have more radiations, so somewhere what you will see that there is a DC value kind of thing. So you can do the checking, आपको इसको deconvolute कर सकते हो कि आपके कितने सारे पीक से ये आपका प्रोफाइल बन रहा है. बट गीगर मोलर में ऐसा कुछ भी नहीं है. Geiger Muller is not going to give the peak at the output when it is in the dead time region. जब वो dead time में है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, सो रहा है. It is not doing anything. So what the problem is, this is one problem. The another problem what is going to have, because you have increased the electric field, आपने potential बहुत ज़्यादा लगा दिया है, तो एक दूसरा problem भी generate होगा, which is actually something like this one. This is your anode. Let me just make it with blue. This is your anode, means negative, या ground इसको मैं बना देता हूँ. Let me make it ground. So this is your anode, and somewhere here you have a cathode negative जो boundary है हमारा, and somewhere here we have a anode.
And from here, the positive charges started their journey. These positive charges started there. These positive charges are nothing, they are ions, they are atoms. जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर गए, so they are nothing but the atoms. When they start their journey, they have started with such a huge value of means voltage difference आपका आपने कितना रखा है 10k तक रखा हुआ 10k volt. That is very large. So obviously they will have good amount of kinetic energy when they reach to this particular cathode. तो जब तक वो cathode पे reach करेंगे तो their kinetic energy is very large. Means at least in such a value that when they hit the cathode, a reaction could happen. Means what they are doing, they are trying to get the electron from the cathode. उनका काम क्या है, उनको तो खुद से अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में है, तो they just want an electron कि ये इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए and we will get neutralized. But before getting neutralized, what they do, they hit the cathode because they have good amount of energy and they have inertia. Inertia ऐसा तो नहीं करेगा suddenly it will stop. Even it get neutralized, even it means this positive charge gets an electron. Let me make it with blue, and the atom become ionized. तो cathode पे reach करने से पहले उसको एक electron मिल गया, and this is a now atom. But this is not going to stop because it was moving with a high velocity. तो ये electron लेते ही neutralize होते, it is not going to stop. So it need to have a collision. तो collide करना ही करना है. But when it is doing a collision with such a high value of energy, then there is a possibility that electron can be emitted. तो सरफेस से आपका एक इलेक्ट्रॉन एमिशन की पॉसिबिलिटी है, और गीगर मोलर में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग अ पल्स. दिस इज व्हाट वी हैव सेड. Only single electron is needed to generate a pulse. It means if you somehow generate an electron from the cathode due to neutralization of these ions, you will get an extra electron, and this electron is capable of doing the what? Again a avalanche. तो ये भी आपके 10,000 avalanche जनरेट करे, यानी रेडिएशन तो आया ही नहीं, हमें क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया. तो गीगर मोलर में अगर आपने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं किया तो इट इज गोन गिविंग द सिग्नल. उसका अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहेंगे, एंड इट इज गोज ऑन गिविंग द सिग्नल. वो क्लिक 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 करते रहे, वो क्लिक क्लिक करते हैं, नॉर्मली टिक 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 आवाज आती है उसकी क्लॉक की तरह. इट जस्ट गोन क्लिकिंग क्लिक 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 क्लिक. तो वो तो स्टॉप होगा ही नहीं. तो वी हैव टू डू द रेक्टिफिकेशन. मींस वी हैव टू स्टॉप दीज आयंस, वी हैव टू न्यूट्रलाइज देम वे बिफोर रीचिंग टू द कैथोड. और कैथोड पे जाने से पहले थोड़ा इसको न्यूट्रलाइज भी कर दे, या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हम करें जिससे कि हमारे पास इस तरह का कोई कंडीशन जनरेट ना हो. तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम क्या था, डेड टाइम था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज रिड्यूस्ड एंड यू डोंट गेट अ एवलांच and you don't do a measurement. Even at that time if radiation enters, you don't know that. आप उसको uncounted ही count करोगे, उसमें कोई counting नहीं होगी. So there is a dead time, and there is a problem of generation of extra electron when the ions, heavy ions, get neutralized at the cathode surface. So this is another problem. So ये दो प्रॉब्लम है. पहला प्रॉब्लम को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे के लिए तो हम वेट कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं. What we can do, we can do the minimization if we have a good circuit at the output. Second problem के लिए we can do something that what usually we do, that if you use the gas which is argon, normally हम argon use करते हैं, inert gas use करते हैं in the cathode, this Geiger-Müller counter या ionization chamber या आपका proportional counter है. तो normally हम argon use कर सकते हैं, oxygen use कर सकते हैं, nitrogen use कर सकते हैं. Oxygen problem करता है क्योंकि it is a corrosive kind of thing, so that can make a corrosion in your surface of the this whatever the instrument you have used, तो उसको खराब भी कर सकते हैं. तो ऑक्सीजन को अवॉइड करते हैं, but nitrogen and argon we can easily use them. ठीक है. So if you fill up, means 90% you fill the Geiger-Müller counter with argon, and plus 10% you put some organic compound, maybe alcohol, maybe ethanol, which is complex, means heavier than your argon but lighter also, and their dissociation and association can done easily. Means you can break them easily, you can join them easily. This is what we need.
So organic compound do this thing very well, that what they do, they easily dissociate and easily they can join up. So when the argon means, when you fill up with 10% of this particular organic compound, it can be alcohol, it can be ethanol, it can be any other light organic compound also. So they are complex. So when they are moving, means they are filled somewhere here. They are, let me, with blue, these blue are complex, you can say, molecules, and these red one are argon. So when they're going to the cathode, what will we do? Before going to the cathode, these get neutralized by these organic compounds, organic whatever the you have filled in this particular gas. So आपका जो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना, वो ऑर्गेनिक के पास चला गया, और ऑर्गेनिक क्या है, हेवी है, हेवी है तो मूव भी स्लो करेगा, उसकी वेलोसिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, एंड व्हेन इट हिट्स द कैथोड इट डिसोसिएट, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन इट गेट डिसोसिएट. तो क्या करेगा, कार्बन एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और थोड़ी देर में फिर वो हाइड्रोजन कंबाइन हो गया. तो देयर इज अ continuously this process is going on, means argon get neutralized before going to the cathode, and the neutralization process of argon give the ionic character to these heavy organic compounds, and these heavy organic compounds which are heavy, they move slowly and hit the cathode with lesser energy, so that no extra electron is being ejected. दिस इज द बेसिक प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को नाम भी देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वेंचिंग. इसीलिए हम इन गैसेस को क्वेंचिंग गैस कहते हैं. वी क्वेंच दिस, मींस क्वेंचिंग मींस वी फ्रीज द प्रोसेस. वी डोंट वांट टू हैव दिस प्रोसेस, वी जस्ट ईज. फ्रीज मींस, क्वेंचिंग का एक्चुअल मीनिंग तो फ्रीज है. if you do something in a certain way, so that is called quenching. So these are quenching gas. Quenching gas are nothing else, they are just organic compound. And what is the benefit of that? That they hit the cathode with a lower velocity, and because they are heavy, or they get dissociated at the cathode and no extra electron is being produced. And after certain time, the organic compound which we have used, if they go on dissociating and if they don't recombine themselves easily, because आपने 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसोशिएट किया था, हो सकता है उसमें से आपके 10,000 में सिर्फ 8,000 ही रिकम्बाइन किया, 2,000 आपके लॉस हो गए. तो धीरे 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 आफ्टर सर्टेन यूज, 1 year 2 year 3 year, डिपेंड अपॉन द whatever the gas you have used, आफ्टर सर्टेन year you again you have to do refilling. आपका क्या होता है, गीगर मोलर काउंटर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, यानी जो जितने आपने ऑर्गेनिक डाले थे, नाउ दे बिकम अ फ्री एटम्स. तो कार्बन अलग हो गया है, हाइड्रोजन अलग हो गया, नाउ दे डोंट फॉर्म ऑर्गेनिक. सो अगेन यू हैव टू डू द रीफिलिंग. तो बहुत सारे केसेस में होता है कि 2 साल 3 साल बाद में वो पूरे गैस को निकाल करके दोबारा हमारे उस गीगर मोलर काउंटर में वी हैव टू फिल द गैस, सो दैट योर लाइफ ऑफ द गीगर मोलर गो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो दीज आर द प्रोसेस. वैसे इसको वर्ड्स में सारे प्रोसेस को लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप, कि भाई पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. ये सारे प्रोसेस अभी मैंने वर्बली आपको बताए पिछले 45 मिनट्स में, तो हो सकता है आपके दिमाग में नहीं भी गया होगा. तो वी नीड द डायग्राम. We don't have more derivations, we have processes, and these processes you don't need derivation, you just need a descriptive diagram or one by one steps. Quenching और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, that is called as external quenching. This what we have I have discussed is called internal quenching. हमने उसके अंदर ही गैस फिल कर दिया है गीगर मूलर काउंटर में, और it has made our system in so good way that don't get any extra electron or stray electron from the system itself. So this is called internal quenching. We can do the external quenching also. In external quenching, what we do, when one pulse has appeared, you decrease the potential. जो आउट आपने जो 1000 ये लगा रखा है ना, फॉर सर्टेन टाइम, यानी जो डेड टाइम जिसको मैं कह रहा हूँ, उस टाइम के लिए मैं इस पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूंगा. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल क्वेंचिंग. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एसी सिग्नल लगाना होता है कि फॉर सर्टेन टाइम द पोटेंशियल इज लेस, फॉर सर्टेन टाइम द पोटेंशियल इज मोर, for certain time the potential is less, for certain time the potential is more. So that is called external quenching. So these become very low, means they are moving with a very low velocity and hitting the cathode with a lesser velocity, so no extra electron is being emitted. So if you decrease the this voltage, so that you have to remember कि किस टाइम पे मुझे डिक्रीज करना है, किस टाइम पे इंक्रीज करना है. सो उसको डेड टाइम के लिए हमें डिक्रीज करना होता है, फिर इनकी कलेक्शन यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाती है, देन अगेन वी इंक्रीज द वोल्टेज.
So that is called as external quenching. So there are two process, internal quenching and external quenching. External quenching kabhi exam mein aisa pucha nahi gaya ki what is internal quenching, what is external quenching. Only quenching is being asked, so you can easily write about the internal quenching. तो और क्या इसमें बताऊं, मैं बताऊं डेड टाइम मैंने बता दिया आपको. डेड टाइम को हाँ क्या डेड टाइम बताना एक बार से. डेड टाइम देखो, डेड टाइम क्या है. What happens, just I go to the diagram. This one. When you have the first, let us say we have got a ion which is entering into the cathode and we have got avalanche, and if we get a certain good number of avalanche, then only I will count as one. यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक number fix कर देते हैं. For example, if I get a current of say 10 milliampere, that will be called as I got a one radiation. This is what I have to decide. And if I get a pulse less than this value, I will not count it. ठीक है, तो ये मैं एक अश्योरिटी रख रहा हूँ अपने आप को कि इसको कहने का मीनिंग ये है कि इतने अमाउंट ऑफ करंट अगर मुझे मिल गया है, तो इट मींस avalanche has been done, and that avalanche is something which is concerned with the Geiger-Müller count, not concerned with the proportional count. Proportional में number of avalanche कम होते हैं और number of avalanche आपके number of ion pair पे depend करते हैं. But Geiger-Müller में number of avalanche ion pair पे depend नहीं करते. Even a single electron can generate that much number of avalanche. ठीक है? Is it clear? Yes sir. ठीक है, तो हम ये नंबर डिसाइड कर लेते हैं पहले ही कि इतने एवलेंच यानी इतना मुझे करंट मिलेगा, यानी आई एम फिक्स्ड कि ये करंट आ गया, तो इट मींस आई हैव गॉट अ गीगर-मोलर रीजन. नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट, दीज इलेक्ट्रॉन जो आयन पेयर यहाँ पे जनरेट हुए हैं, जो आपके प्राइमरी से भी हुए हैं, सेकेंडरी से भी हुए हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आयन पेयर में क्या हो रहा है कि फॉर क्विकली दीज in nanosecond these electron will get collected at the output. तो आपको पल्स मिल गया. ठीक है, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लाइट थे और वो सारा प्रोसेस आपका एनोड के पास ही हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पाथ भी कम है और लाइटर भी है, तो दे गेट कलेक्टेड एट द एनोड, दे गेट गिव अ करंट, आपको करंट मिल गया. बट आयंस हेवी है, दे नीड सर्टेन टाइम टू रीच टू द कैथोड. और जब आपके इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए हैं, at the same instant what the cathode will look like for whole of the part of the Geiger-Müller, that it has been covered by a cloud of positive ions. तो for instant क्या होगा, जो सेंट्रल एनोड है वो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव आयन से कवर्ड हो गया है, और वो आयन धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, बट पहले इनिशियली क्या है, दे आर कवर्ड. सो इफ इट इज कवर्ड, योर इफेक्टिव रेडियस ऑफ एनोड हैज इंक्रीज्ड. When your effective radius of anode has increased, your electric field of this apparatus has decreased. When your electric field has decreased, in that particular time when they are getting somewhere here, जितना इनको time लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, if you get another radiation, मान लेते हैं blue one is the another radiation, if it enters, it is not going to produce that much number of avalanche. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिक्रीज हो गई है, तो आपके एवलेंच ही जनरेट नहीं होंगे, तो आपको जो पल्स मिलेगा, सेकेंड पल्स वो छोटे हाइट का मिलेगा, एंड यू डोंट वांट टू काउंट दैट, आप उसको डिसरिगार्ड कर दोगे. आपको तो ये वाला पल्स चाहिए, तभी आप कहोगे ना कि गीगर-मोलर रीजन में पहुंचा हूं मैं. अगर छोटे पल्स आ रहे हैं तो यू डोंट काउंट दैट. तो आप क्या कर रहे हो, इस रेडिएशन को काउंट ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट काउंटिंग दिस वन इवन दो दैट हैज एंटर्ड इनटू द गीगर-मोलर. सो एट दैट टाइम मींस these charge from the surface of the anode to the cathode, whatever the time it is going to take, means Geiger-Müller को अपने दोबारा उसी स्टेट में आने में, in the same similar kind of electric field, to make another measurement, it takes certain time. This time is called dead time because it is not doing any measurement. It is not doing any measurement at that time, even though the radiation is coming in. तो अगर रेडिएशन आ भी रहा है तो उसको नहीं काउंट करेगा, क्योंकि एवलेंच ही नहीं जनरेट हो रहे हैं, करंट ही नहीं जनरेट होगा इतना ज्यादा, so it is not going to do the measurement. This is what is dead time of the instrument. You have to wait for certain time, और जब ये सारे आयंस आपके कलेक्ट हो गए कैथोड पे, तो दोबारा आपका सारा कंडीशन सेम हो गया, and if the radiation comes again you will get the pulse. So this is a dead time. I just make the dead time profile diagram also with respect to current. This is what the
picture we get at the output, if you want to see all the pulses which are being generated, कुछ इस तरह का होता है वो. This is the first pulse which you are getting, and this is the height which you require for a click sound from the geiger. ये आपको करंट चाहिए, तभी आप कहोगे कि मैंने रेडिएशन को डिटेक्ट किया, अदरवाइज यू वोंट से कि रेडिएशन आया यहाँ पे. ठीक है, डेड टाइम क्लियर हो गया? पहले ये बताओ. यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया. Okay. Now, what happens normally if you want to note the other pulse also, which is being generated by the geiger. So other pulse will be of a smaller size. Generate to honge, but that will be of a smaller size. And why that goes on increasing? Because as the positive ion move away from the anode, the electric field slowly getting improved. तो तब तक improve नहीं है जब तक सारे के सारे न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते हैं. तो जैसे जो away from the anode होते हैं, you can have good amount of output. The pulse increase to ho rahe hain, but we don't count them as a pulse. And after a certain time, you get the same height pulse. So this is the second count. So if you see on the CRO, अगर output आप CRO पे देखोगे तो ऐसा कुछ output दिखेगा आपको. That pulse is there, then another pulse is there, another pulse is there, but you don't count this. You will say one radiation, yes, the second is here. Then you can have third. If you get, means for certain time, even when you are getting these pulse, जो आपको pulse मिल रहे हैं, इसकी height जब तक यहाँ तक नहीं आती जो हमें permissible height हमने decide कर रखी है, so I don't say that is a count, but you can decrease that height and you can say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. आपने 5 radiation count किए, और अगर आपने ये height ज्यादा कर दी तो आपने 2 ही radiation count किए, इन तीनों को आपने miss कर दिया, which has been generated, which are there. उन्होंने pulse generate किया है, but आप उसका count नहीं कर रहे. So what the time of this Geiger Muller, I will just draw. This time is called as dead time. Somewhere here means not exactly matching with this. So इस diagram में ऐसा लग रहा है कि match कर रहा है इसके साथ. But this time is called dead time. Pulse के profile और pulse जब सारा collect हो गया है, तो आपके जो current generate हो गया, उसके बाद current की value generation कम होगी, current has decreased. तो somewhere it goes to a certain limit कि आपकी electric field इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि दूसरा मेजरमेंट आप कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट द डेड टाइम वी कॉल. एक प्रोफाइल पीक से हम ऐसे डिफाइन करते हैं डेड टाइम. दिस टाइम इज कॉल्ड रिकवरी टाइम. टाउ रिकवरी यानी एक पूरा प्रोसेस होने में, यानी आपके आयंस के पूरे कलेक्शन होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकवरी. नाउ इट इज केपेबल ऑफ डूइंग अनदर मेजरमेंट, दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग. एंड अनदर टाइम, no, sorry, not this is not the recovery time. Let me just this is resolution time actually, not recovery. Recovery is this one. This one means if you are going from the starting to starting or peak to peak, that is up to you. You can define from the starting to starting or peak to peak. You can define from this time is actually the recovery time. Recovery means when the Geiger has again recovered from its situation where it has done the measurement, and now after certain time again it is capable of doing a measurement of a similar height of pulse. So this is called as recovery time. But dead time is not this recovery time. Dead time में क्या है कि यहाँ पे measurement हो सकता है, measurement is possible, but that height is not good enough. Height अगर आपको अच्छा मिल जाता that is okay, but height is not good enough. So this is called dead time. इस time पे वो measurement नहीं करेगा. जब ये pulse का आपको पूरा pulse का profile और दूसरे pulse के starting का time और इस pulse के starting का, this is called dead time and this is called recovery time. This is not the recovery time. This is something which is resolution time. तो resolution हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ही लिख रहे हैं. ठीक है. Dead time and recovery time. Recovery time क्या है? It is a time between two pulses, and dead time is a time between two pulses irrespective of the height of the pulse. So mathematically you can define. Dead time is, it is between the two pulses, time between the two pulses irrespective of the height of the pulse, and recovery time is, it is a time between two pulses with respect to if they get the similar height. So the same height के जो है ना उन pulses के बीच में जो time होगा, that is called as recovery time. ठीक है. रिकवरी टाइम का मीनिंग ये है कि गीगर मोलर आपका सेम हाइट का पल्स दोबारा जनरेट करने के लिए रेडी है. डेड टाइम का मीनिंग क्या है? इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग अनदर पल्स बट द हाइट मे बी
different. So height is not the matter. So that is called the dead time. Clear? डेट टाइम को हम नंबर ऑफ उससे हम मतलब एक फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. 54 हो गया. आई विल लीव यू. नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. दैट इज कंसर्न विद द डेट टाइम एंड हाउ मेनी पल्सेस यू आर गेटिंग. मींस यू कैन जनरेट गेट द आइडिया दैट हाउ मेनी रेडिएशंस हैज एंटर्ड इनटू द गीजर मॉडल. तो एक एग्जांपल करेंगे एंड देन वी विल गो टू द न्यू डिटेक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज स्सिंटिलेटर डिटेक्टर. स्सिंटिलेटर वर्ड सुना है किसी ने? गीगर मूलर के जो डिसएडवांटेज है ना, दैट व्हेन वी इंप्रूव ऑन दैट डिसएडवांटेज देन वी मेक द स्सिंटिलेटर. तो स्सिंटिलेटर थोड़ा सा इंप्रूव है ओके जो गैस डिटेक्टर है उससे, बिकॉज स्सिंटिलेटर में आप लिक्विड और सॉलिड फिल कर सकते हो. सो हैव यू हर्ड अबाउट स्सिंटिलेटर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्सिंटिलेटर? रदरफोर्ड में स्सिंटिलेशन. स्सिंटिलेशन वर्ड सुना होगा, क्या होता है? स्क्रीन पे ब्राइट डॉट्स. Yes, you can say yes. Means something which is concerned with the light. So if you are able to generate light, that is a scintillation. तो चमकना, तो चमकने वाली चीजों को हम scintillator कहते हैं. So fluorescence is a kind of scintillation, but not exactly as a scintillation. And phosphorescence is also a kind of a scintillation. We cannot say exactly as a scintillator. We will do the scintillator detector next time. तो वो भी हमारा नेक्स्ट यानी कल ट्यूसडे वो भी खत्म हो जाएगा कल. देन वी आर लेफ्ट ओनली विद द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर दैट इज पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो वी विल ओनली वर्क ऑन द डिजाइंस व्हाट काइंड ऑफ पीएन जंक्शन यूज्ड टू मेजर द रेडिएशन. हमारा ये टॉपिक सेमेस्टर ब्रेक से पहले यानी नेक्स्ट वीक पे हमारे पास है, तो उससे पहले होपफुली वी विल फिनिश ऑफ दिस वन. So we will be left only with the particle physics. So अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा with a good pace we are going. क्लास में होते तो ये सारा मैं जो अभी लाइन बोल रहा था मैं आपको डिक्टेट करता है. राइट फर्स्ट पॉइंट, देन राइट सेकंड पॉइंट, देन राइट थर्ड पॉइंट. बट ऑनलाइन में तो मुझे नोट्स देने ही है. So why I will make you write that? You just listen this and you can write. You can get the afterwards the things you will get. वहाँ पे आपको पॉइंट वाइज में सारे जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया ना वन बाय वन कैसे फॉलो होता है एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट यू विल गेट दैट. इसलिए हमारा शायद ऑनलाइन में थोड़ा सा फास्ट चलता है स्पीड, ऑफलाइन में थोड़ा सा स्लो होता है. सो नवंबर में हमारे पास पूरा प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 15 डेज हो गए. तो मेरे ख्याल से हमने सही बनाया. मतलब जो टाइम मैंने दिया ना आपको अपने अपने टाइम पे देना. कोई बच्चा एब्सेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं. जैसे एक बच्चे ने बोला कि बहुत सारे बच्चे छोड़ गए. So I have given you the enough time. So आपके पास एब्सेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं. उस दिन 2 बच्चों का ही होगा. जिस दिन जिसका है उसी दिन होगा. ठीक है. एंड डोंट ट्राई टू मींस बाईपास की सर आज नहीं कर देंगे कल नहीं परसों. वैसा मत करना. होपफुली क्या आप अपने डेज पे ही अपना कंप्लीट कर दो. ठीक है. बाकी क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं दिया दोनों बच्चों ने, तीनों ने. आई हैव आस्क्ड समथिंग टू यू. अभी भी आंसर है? क्लास बंद करने से पहले आंसर बता दो या चले गए वो? They might have gone after giving the presentation कि चलो हो गया हमारा काम तो आज का. हाँ? नहीं आंसर नहीं आना तो चैट में आंसर. हाँ चले गए ना. they are just waiting कि कब हमारा खत्म. नहीं है राजकुमार भी नहीं. नहीं है राजकुमार is not there. Ananya is not there and नंद किशोर is not there. तो इनके 2 नंबर काटने पड़ेंगे. आंसर नहीं दिया ना. आंसर अभी मैं बताऊंगा नहीं, अभी सभी को देना है वन बाय वन. तो ध्यान रखना क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा. ऐसे मत सोचना कि सिर्फ प्रेजेंटेशन ही देना है. यू हैव टू आंसर दैट क्वेरी आल्सो. दूसरे स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ. तो दैट कुड ऐड अप योर मार्क और दैट कुड सबट्रैक्ट योर मार्क्स आल्सो. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. नोट्स होपफुली आई विल प्रोवाइड यू आफ्टर ब्रेक. तो ब्रेक के बाद आपको दोनों तीनों चैप्टर के सब नोट्स मिल जाएंगे. तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. तो सेमेस्टर ब्रेक के बाद यानी सेकंड वीक यानी थर्ड वीक में आपको मिल जाएगा सारा कुछ. ठीक है. तो चलो बाय बाय. फॉर नाउ वी आर मीटिंग टुमारो 1 o'clock. ओके सर.
ओके, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। एंड